कार्बन के पास एबिलिटी होती है कि वो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, फिर वो डबल बॉन्ड भी बना सकता है, और वो फर्दर लाइक अब ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है. प्लीज यू शुड नॉट एक्चुअली वरी अबाउट इट. व्हाई? बिकॉज सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही कार्बन है बेसिकली जिसके ऊपर ये होल केमिस्ट्री रिवॉल्व करती है. रिमेंबर दैट यही कार्बन हैज द एबिलिटी, ये कार्बन हैज द एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स. सो कार्बन हैज द एबिलिटी to form long chains. Okay, triple bond is the strongest bond, or a double bond or a single bond. So जो कार्बन के पास ability to form long chains and rings, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे हमारी केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि जो कार्बन है वो लॉन्ग चेन्स बना रहा होगा, फिर कार्बन जो है वो रिंग्स भी बना सकता है. इट कैन फॉर्म रिंग्स एज वेल. सो ये एबिलिटी है कार्बन की. ये इट इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग, आई मस्ट टेल यू, कि ये सारे ग्रुप 4 में से इट इज only the carbon which can form long chains and rings. I mean, not even silicon, germanium, tin, lead, right? So carbon has this peculiar nature. So basically ये सारी जो chemistry है, it actually revolves around carbon. आप भी carbon के बने. You are made of carbon, by the way, right? Nearly everything in this world is actually made of carbon. Nearly everything. I won't tell you a couple of things. ठीक है, कुछ चीजें याद रखिएगा प्लीज, ऑफ कोर्स, क्योंकि आफ्टर ऑल हर चीज एक बड़ी बात याद रखें, हर चीज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, हर चीज एग्जाम नहीं होती. इफ अंडरस्टैंडिंग इज देयर, यू कैन ऑलवेज थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एज वेल. आज से कोई hundreds and hundreds and hundreds and hundreds of years back, man used to think कि हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बना सकते. It was called as vital force theory, right? So we used to think that we cannot make organic compounds. Organic compounds only exist in flowers, fruits, or vegetables. Until एक scientist आया और उसने organic compound बनाया यूरिया from ammonium cyanate, right? तो basically उसने ammonium cyanate से यूरिया बनाया. In the laboratory, he made urea from ammonium cyanate. उसने जब अमोनियम साइनेट से यूरिया फॉर्म किया, तो यूरिया इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी एवर फॉर्म इन द लेबोरेटरी. दिस इज NH4OCN अमोनियम साइनेट एंड दिस इज NH2CONH2 यूरिया. यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी एवर फॉर्म इन द लेबोरेटरी. और जैसे यूरिया बना, हमने वाइटल फोर्स थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया. हमने कहा ये तो इंसान भी बना सकते हैं. उस वक्त से लेके आज तक हमने मिलियंस जिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना लिए कि इट हैज लेड टू अ न्यू केमिस्ट्री कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. आज इतने ज्यादा हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना लिए, राइट? इवन यू कैन सी द बिग एरोप्लेन्स आर नाउ मेड ऑफ पॉलीमर्स, केवलार. ये जो गाड़ी है इसको आग क्यों लगती है? ये तो लोहे की बनी होती है. इट इज 60% पॉलीमर. अगर मैं इस रूम में देखूं तो ये रूम इज मोर लाइक 90% इट्स पॉलीमर. It's a plastic world which we're living in. Students normally पूछते होते हैं, सर किस चीज का स्कोप है? वैसे तो I always say that स्कोप तो स्कोप तो किसी भी चीज का नहीं होता. You always create the scope for yourself, right? लेकिन I think the upcoming ये जो आपके decades हैं, it's all about polymers. It's all about data analysis maybe. ऑर्गेनिक कहां नहीं है? आपको पता है कि 1998 के बाद जब ये नैनो साइंस की डेवलपमेंट हुई, उसके बाद फिर कॉस्मेटिक्स की डेवलपमेंट हुई, ये सारी डेवलपमेंट इट राइज फ्रॉम द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वन ह्यूज ब्रांच. इसकी आगे फर्दर स्पेशलाइजेशंस हैं. लोग फिर इसमें स्पेशलाइज करते हैं फर्दर. आई माइट हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट आई मीन वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, he she became a perfumist. So for that, she had to pursue chemistry. So like you can say that physics is more like an external work which you're seeing, and the chemistry is the masonry behind that. So ये जो organic chemistry है, वैसे भी like if I give you more examples, ये जो आपके टायर्स होते हैं, right? ये भी तो रबर है.
And now what is rubber? It's again an organic polymer. अगर मैं ये epoxy resins की बात करूं, जिसको फेमस आप सुनते होंगे, डिपॉक्सी स्टील सुनते होंगे, स्मथ बॉन्ड सुनते होंगे, जो कि एडहेसिव्स होती हैं, ये क्या हैं? They're all organic polymers. They all are organic compounds. So nearly everything you yourself, I mean the clothes you're wearing, is all organic about it. हमारे बस मसला सिर्फ इतना है कि आर ओ लेवल, IGCSE एंड A लेवल स्टूडेंट्स, व्हाट दे डू इज दैट कि वो सिर्फ ऑर्गेनिक को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं. आप सिर्फ बस ये पढ़ते हैं, अच्छा एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, इनके रिएक्शंस क्या होते हैं, ये कैसे याद करेंगे, राइट? ये बेसिकली आप डिसइंटरेस्ट क्रिएट करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. हालांकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज एक्चुअली वेरी एक्साइटिंग. फ्यूल से लेके, फ्यूल से लेके आप कपड़े पहनने तक, इट्स ऑल ऑर्गेनिक. एवरीथिंग. ये जितने आप ये जो है लेट्स से पॉलिएस्टर्स देखते हैं, फिर आपकी बॉडी में प्रोटीन्स हैं, स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, राइट? देन वी हैव द पॉलीस्टाइरीन, वी हैव पॉलीटेट्राफ्लोरोईथीन, फिर वी हैव द पॉलीथीन बैग्स. ये सारे क्या है? अब तो वी हैव मेड द बायोडिग्रेडेबल जो पॉलीथीन बैग्स टू. So organic chemistry has actually much more to offer. So इस organic session के अंदर, of course, we will learn what is in the syllabus, but at the same time, we'll also learn that what organic has to offer. You should know as science students what organic chemistry is, by the way. Okay. So organic chemistry is the chemistry of carbon. जितने compounds पढ़ेंगे उन सब में कार्बन होगा. आपने गौर किया यहाँ पे? ये यूरिया है, इसमें तो कार्बन है. Every organic compound has carbon, but not every carbon containing compound is organic. अब CO2 is carbon dioxide, it's not organic. Now how would you come to know? ये तो बात की बात है. लेकिन हर organic compound में कार्बन जरूर होता है. जब ये साइंटिस्ट ने यूरिया बना लिया लैब में और उसने कहा कि इंसान ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकता है, तो फिर इसने कुछ हमें स्टेट की प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट? सो लेट्स सी द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. Properties of organic compounds. First, they are actually carbon containing compounds. They are covalent compounds. थर्ड, याद रखें हर ऑर्गेनिक कंपाउंड को आग लगती है. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंबस्टिबल, सो दे आर कंबस्टिबल. अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो कंबस्टिबल ही, वो तो फायर एक्सटिंग्विशर उल्टी. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंबस्टिबल. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेड फ्रॉम सिंपल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. They are made by simple methods of preparation. अभी आप पढ़ेंगे, रिएक्शंस पढ़ेंगे, बहुत सिंपल वन स्टेप रिएक्शंस होंगे और ये रियलिटी है. देखिए, आपको ना साइंस को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है. साइंस क्रिएट नहीं की जाती है, बात याद रखिएगा. साइंस ऑब्जर्व की जाती है, उसके बाद इंडक्शन होती है, फिर डिडक्शन होती है, फिर आपकी थ्योरी बनती है, फिर फिनोमेनन बनता है. लाइक a student may have a question that why only why the organic compounds have to contain carbon. असल मसला ये है कि जब हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑब्जर्व किया तो सब में एक चीज कॉमन थी और वो कार्बन था. हमने वहां से कंक्लूजन ड्रॉ की कि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होता है. आर यू गेटिंग मी? तो साइंस को जब भी डेवलप किया जाता है तो साइंस को रियल लाइफ से कनेक्ट किया जाता है हमेशा. जब हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमने इसको डेवलप, तो हमने ऑब्जर्व किया रियल लाइफ में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं. तो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक बात कॉमन थी कि उन सब में कार्बन था. वी सेड इवेंचुअली that all organic compounds contain carbon. They all are combustible. इनको आग लगाएंगे, इनको आग लग जाएगी. So they'll combust. Or you can say they'll burn. All organic compounds burn.
So basically, how would you identify that which compound is organic or inorganic? By the way, ठीक है, याद रखें जिस कार्बन जिस भी कंपाउंड में कार्बन है वो ऑर्गेनिक है एक्सेप्ट CO2, H2CO3, राइट? ये कुछ फेमस है क्योंकि जो ऑर्गेनिक नहीं है, लिख ले मेरे साइड पे, CO2 ऑर्गेनिक नहीं है, H2CO3 ऑर्गेनिक नहीं है, HCN ऑर्गेनिक नहीं है, इन सब में कार्बन है लेकिन ये ऑर्गेनिक नहीं है। इसके अलावा अगर कोई और कंपाउंड है तो हम आपको खुद ही बता देंगे ये ऑर्गेनिक नहीं है, अगर ना बताया तो वो ऑर्गेनिक है, राइट? सॉल्ट्स भी, इसकी सॉल्ट्स Na2CO3 ऑर्गेनिक नहीं है, राइट? क्योंकि ये फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, इनको आग नहीं लगती, एंड दे कैन नॉट मेड बाय सिंपल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। सो बेसिकली इन साइंटिस्ट ने फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज बताई एज वी सॉ। अब इंटरेस्टिंग बात ये थी कि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड, अब देखें जी, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स बैक हमने कहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड इंसान नहीं बना सकता, फिर हमने बना लिया। उस वक्त से लेके आज तक हमने इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना लिए दैट इट हैज लेड टू अ न्यू केमिस्ट्री कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब हम बातें करते हैं ना एलिमेंट्स की इन द पीरियोडिक टेबल, तो एक साइंटिस्ट ने मैंगनीज को डिस्कवर किया, उसने अपने नाम के बीच उसका नाम लिखा मैंगनीज। आइंस्टाइन ने एक एलिमेंट डिस्कवर किया, उसका नाम लिखा आइंस्टीनियम। सोडियम एक रैंडम नेम है, वनेडियम इज नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। तो बेसिकली जिस जिस साइंटिस्ट ने जॉन जॉन सा एलिमेंट डिस्कवर किया उसने अपने नाम पे उसका नाम रख दिया, फिर रैंडम नेम रख दिया। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिलसिले में there is a specific rule of naming the organic compound, and it depends on carbon. So therefore, we will learn the naming of the organic compounds. आज तो हम introduction कर रहे हैं organic chemistry का, right? So we will do naming of organic compounds, please. And how an organic compound is named? How an organic compound is named. It depends on the number of carbon atoms a compound has. It depends on the number of carbon atoms a compound has. Okay, ye is actually called as nomenclature. Like if a compound has one carbon, so its name will start from meth. इसलिए तो आई थिंक आप लोग CH4 को आज तक मीथेन बोलते आएंगे ना, आपने गौर किया मैंने मीथेन बोला इसको हमेशा, इसमें एक कार्बन था तो इसलिए मेथ। But getting me? So if an organic compound has one carbon, its name will start from meth. If it has two carbons, it's eth. If a compound has three carbons, it's prop. The Greek counting, meth, eth, and Is it what? Is it Greek counting? yeah. We cannot say it as a Greek counting. Why? Because it was only used for the organic chemistry, not for the other things. It is just in terms of chemistry. I mean the nomenclature. Let's say for example, आप लोग इसको एथेनोइक एसिड बोलते होंगे, एथेनोइक एसिड, क्योंकि इसमें ये दो कार्बन हैं, तो इट्स कॉल्ड एज एथेनोइक एसिड। तो एथेनोइक एसिड, एथ। With 4 carbons is but, 5 carbons is pent, 6 carbons hex, 7 carbons hept, 8 carbons oct, 9 carbons non, or with 10 carbons it is a dec. So you will see that when we will be naming these compounds, हम आगे naming करेंगे of course, ही बात है, तो मैं इस चीज को आपको जरूर रिकॉल करवाऊंगा कि इट विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन्स द कंपाउंड हैज। जितने कार्बन्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली उसका लगेगा प्रीफिक्स। सो दीज ऑल आर एक्चुअली द प्रीफिक्सेस व्हिच we'll use when we'll have to name the organic compound.
What is the prefix for 9 carbons? It's non, N-O-N. And sir, what about the 10th one? Is और like सर death, सफिक्स D-E-C. और सर Uh, सफिक्स क्या होंगे? जो बेसिकली सफिक्स होगा वो डिपेंड करेगा कि वो किस होमोलॉगस सीरीज को बिलोंग कर रहा है। लेकिन मैं सफिक्स को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। जब हम हर होमोलॉगस सीरीज पढ़ेंगे तो हम उसके सफिक्स पढ़ेंगे। एक तो यहां से आएगा प्रीफिक्स, होमोलॉगस सीरीज से आएगा सफिक्स, और हम कंप्लीट नाम कर देंगे। Yes, you have to learn these prefixes. Shall I go on the next page, everyone? Now, once you know that what is nomenclature and how the organic compound will be named, in this organic chemistry, guys, we shall be learning more things too. For example, in the normal chemistry, we learned about, if you remember, isotopes and allotropes. In the organic chemistry, we'll start learning about the structural isomers, right? So we'll be learning about structural isomerism. With respect to every homologous series, we will be learning structural isomerism. Now, what are structural isomers? So structural isomers, isomers are organic compounds which have same molecular formula but different structural formula. मैंने अभी सिर्फ definition लिखी है for the heck of writing it. ये आप इसको जरा क्लियर करके लिख सकते हैं जो स्ट्रक्चरल के आगे लिखा हुआ है? Structural isomers. Structural isomers are organic compounds which have same molecular formula, okay, but different structural formula. अब ये definition के आपके details में नहीं जा रहा, क्योंकि हम जब homologous series पढ़नी शुरू करेंगे तो हम हर homologous series के respective structural isomers पढ़ेंगे. लेकिन please remember, structural isomers, I'm giving you information, right? कि structural isomers have same chemical properties but different physical properties. So basically in the whole organic chemistry, we will be learning in details about structural isomers. तो अभी हम basically introduction ले रहे हैं organic chemistry के. Organic में what we will study in details. तो हम उनकी नेमिंग पढ़ेंगे, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़ेंगे. So structural isomers are organic compounds which have same molecular formula but different structural formula. Moreover, structural isomers have same chemical properties but different physical properties. What do these statements mean? When the time will come, of course, I'll explain you. लेकिन अभी I'm giving you introduction. ये चीजें हम आगे जाके we will learn in details. Okay, I'm moving on, guys, everyone. Now, in the whole organic chemistry, we shall also be learning about hydrocarbons. तो हम hydrocarbons के बारे में भी पढ़ेंगे. Remember, hydrocarbons, they are compounds which contain only carbon atom and hydrogen atom. So they are compounds
which contain carbon atoms and hydrogen atoms only. In this whole organic chemistry, we will be learning that hydrocarbons are actually of two types. They can be aliphatic hydrocarbons. They can be alicyclic hydrocarbons. Aliphatic hydrocarbons क्या होते हैं? Alkanes, alkenes, alkynes are the aliphatic hydrocarbons. जिसमें से alkanes are saturated hydrocarbons, whereas alkenes and alkynes are unsaturated hydrocarbons. So alkanes are saturated hydrocarbons, alkenes and alkynes are unsaturated hydrocarbons. If we talk about the alicyclic, so they are cycloalkanes and cycloalkenes. The cycloalkanes are saturated and cycloalkenes are unsaturated. Basically, aliphatic का मतलब है straight chain या branch chain. Aliphatic का मतलब क्या है? Straight chain या branch chain. Straight oblique branched chain compounds. Alicyclic का मतलब है cyclic compounds. अभी सिर्फ लिख लें क्योंकि of course when the time will come and I'll explain you, so you will come to know. इसलिए मैं basically introduction में I tell each and everything what we'll study. तो एटलीस्ट आपके ब्रेन में रहेगी ये बात और फिर आपकी क्यूरियोसिटी रहेगी कि what do these things mean. सैचुरेट का मतलब क्या था अगर आपने पूछना तो बताने लगा, लेकिन I mean a time will come and I'll explain you. तो सैचुरेटेड मींस कि इसमें कोई और चीज ऐड नहीं हो सकती, वो सैचुरेट हुआ है. इट कैन नॉट शो एडिशन रिएक्शन. So saturated in the organic chemistry means if I say a compound is saturated, it means it cannot show addition reaction because it is saturated. So basically in the whole organic chemistry, जी बेटा साइक्लिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये देखिए मैंने क्या लिखा था, ये चेन्स और रिंग्स. रिंग मीन द साइक्लिक कंपाउंड. ये साइक्लिक कंपाउंड है, राइट? दिस इज द साइक्लिक कंपाउंड. Organic compounds may be solids, may be liquids, may be gases. They exist in all three physical states. Sorry, please come on again. Can you please scroll down a bit? Yes. जी हारिस बिल्कुल होता है, लेकिन मैं अभी सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मैं अभी इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा. I hope I make it clear. I'm not explaining you each and everything right now. Why? Because I'm just giving you introduction to organic. When the time will come, I will explain all the words which I wrote. Saturated, unsaturated, cyclic, non-cyclic. ये चीजें क्या होती हैं? Of course, we will learn and we will go in details of that. I'm just raising the curiosity levels
ताकि आपके ज़हन में रहे कि हमने ये बातें पढ़नी है इन डिटेल्स। जी guys, shall I go on everyone? Now, देखिए जी, जब हम ये एलिमेंट्स को डिस्कवर कर रहे थे, ठीक है, लिसन बी केयरफुली नाउ, जब हम एलिमेंट्स को डिस्कवर कर रहे थे तो हमारे पास एलिमेंट्स कोई हंड्रेड्स ऑफ एलिमेंट्स आ गए, राइट? वी हैड लाइक हंड्रेड्स ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा, हंड्रेड्स ऑफ एलिमेंट्स की अगर आपने प्रॉपर्टीज याद करनी है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लर्न द प्रॉपर्टीज ऑफ हंड्रेड्स ऑफ एलिमेंट्स फॉर साइंटिस्ट्स, फॉर यू, फॉर मी। हमने क्या किया? हमने एलिमेंट्स को ग्रुप्स की फॉर्म में अरेंज कर दिया और हमने कहा कि एलिमेंट्स लाइंग इन वन ग्रुप विल हैव सेम केमिकल रिएक्शंस, यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम सारे ग्रुप वन के एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स लाइंग इन वन ग्रुप विल हैव सेम केमिकल रिएक्शंस। हमारे लिए एलिमेंट्स को पढ़ना आसान हो गया। इट वाज इजी फॉर अस टू लर्न द एलिमेंट्स। आज हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं जो ग्रुप्स की, तो जो ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है वही एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी हो जाती है। तो कितना आसान हो गया बेसिकली एलिमेंट्स को पढ़ना। अब सोचें, हंड्रेड्स ऑफ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज याद नहीं होती, ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास जिलियंस हैं, तो इनकी कैसे याद होंगी? जिस तरह आपकी हमने आवाज लैग कर रही है। सही आ रही सर। No, sir, it isn't coming. Oh, I think, like, I'll repeat, like, I think you have a problem in connectivity, but I'll repeat. I was saying you that there are hundreds of elements जिनकी प्रॉपर्टीज याद करना मुश्किल है। इसलिए हमने क्या किया? हमने एलिमेंट्स को ग्रुप्स की फॉर्म में अरेंज कर दिए इन द पीरियोडिक टेबल। आज हम ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज याद करते हैं और वही एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। All elements lying in one group have same chemical reactions. ये तो फिर hundreds of elements थे। Organic compounds तो zillions हैं। तो zillions कैसे याद करें? तो जिस तरह हमने ग्रुप्स बनाए पीरियोडिक टेबल में, इस तरह हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होमोलोगस सीरीज बनाई। जिस तरह ग्रुप 1 is alkali metals, group 2 alkaline earth metals, group 7 halogens, group 8 noble gases। इस तरह we made homologous series in the organic chemistry, alkanes, alkenes, alcohols, carboxylic acids। जिस तरह ग्रुप 1 के अपने मेंबर्स हैं, alkanes के अपने मेंबर्स हैं। जिस तरह ग्रुप 7 के अपने मेंबर्स हैं, alcohols के अपने मेंबर्स हैं। So guys, in the organic chemistry we made homologous series। So what is a homologous series? Remember, all members of one homologous series have same chemical reactions, yeah, properties, but different physical properties. So all members of one homologous series have same chemical properties, लेकिन इनकी physical properties different. All members have same general formula. जब मैं बात करूं केमिकल प्रॉपर्टीज तो इट मींस केमिकल रिएक्शंस। जब मैं बात करूं आपसे फिजिकल प्रॉपर्टीज की, इट मींस मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, विस्कोसिटी, वोलेटिलिटी। हम आगे बातें करेंगे। सर एक सवाल है सर, आइसोमर्स और होमोलोगस सीरीज के अंदर क्या डिफरेंस होगी फिर? नहीं, बेसिकली देखो, जिस तरह लेट्स से एक होमोलोगस सीरीज है एल्केन्स, लेट्स से। अब एल्केन्स के मेंबर हैं मीथेन, ईथेन, फिर प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, फिर डेकेन एंड सो ऑन। अब लेट्स से अगर मैं बात करूं आपसे पेंटेन की, पेंटेन is C5H12,
अब C5H12 के स्ट्रक्चर्स एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो होमोलोगस सीरीज के अपने मेंबर्स हैं और एक मेंबर उसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो सकते हैं. So do you get me now? Yes, yes, thank you. Okay. Of course, we'll learn in details. So guys, homologous series, all members of one homologous series have same chemical properties but different physical properties. All members have same general formula. Remember, all members have same functional group. Remember, each successive member differs by CH2 group. जिसका mass is 14 from the preceding member. अच्छा, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है तो मैं अभी नहीं बता रहा, इसके ऊपर स्टार डालने बेशक. ठीक है, जिस दिन टाइम आएगा मैं बताऊंगा आपको उस दिन कि इसका मतलब क्या है स्टेटमेंट का. So each successive member differs by CH2 group, a mass of 14 from the preceding member. अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता होता है नॉर्मली, it's either 2 marks or 3 marks question. What is meant by the term homologous series? तो आप ये मैंने जो 4 पॉइंट लिखे हैं, आप इसमें से 2 पॉइंट लिख दें, 3 पॉइंट लिख दें या 4 पॉइंट लिख दें, you of course you'll score full marks. So we normally ask you a question of let's say 2 marks or 3 marks question. You write these points and you score the marks. Okay. Ji Umar, can you read the last one? Each successive member differs by CH2 group, mass 14, from the preceding member. So can you say that? Degradation physical properties. No, Javeria, no. Let's not say it. Functional group, इससे भी आप प्लीज डाल लें aesthetic. Abhi soon we'll come to what is functional group. Sorry, beta, you were breaking up. I couldn't hear you. Ji, please go on. Ji. Still, sir, my question is that if the functional group is same, then how do they differ from each other? Like functional group is the only difference. नहीं, बेटा, नहीं, प्लीज ज्यादा आगे ना चले, मेरे साथ रहे. सर मैंने आज लेक्चर लिया स्कूल में फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. क्या उसमें आपने क्या पढ़ा है? A teacher told me that they have same like he told us about a structure which was carrying out 1 carbon and 3 hydrogens. He told me this is the inactive site of the like formula, and yeah, this one is the functional site. वो जो functional site है वो differ करेगी from 3 or 4 structures में हमें करवाई थी. नहीं, वो पता नहीं, like I don't know कि उन्होंने क्या सवाल कराया होगा आपको, लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे एल्कीन्स की, राइट, तो जितने मेंबर्स एल्कीन के हैं उन सब में CC डबल बॉन्ड है, और वो डबल बॉन्ड इज अ फंक्शनल साइट एंड इट्स कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप. All members of one homologous series will have same functional group. अब इसमें अल्कोहल्स हैं, अब अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप इज OH, तो every member in the alcohol family will have the OH group. अगर उसमें OH नहीं है फिर आप उसको अल्कोहल क्यों कहते हैं? Are you getting me? या सर एक उन्होंने OH का बनाया था एंड या इसी तरह से उन्होंने 3 स्ट्रक्चर्स बनाए थे.
तो इसका मतलब है वो 3 डिफरेंट होमोलोगस सीरीज हुई ना। फिर इसका मतलब है अगर एक उन्होंने OH का बना दिया, एक उन्होंने डबल बॉन्ड का बना दिया, एक उन्होंने COH का बना दिया, तो फिर तो ये आपके 3 डिफरेंट होमोलोगस सीरीज होगी। ठीक हो गया, ठीक है। Okay, yeah. Now, so basically, all members of one homologous series have same chemical properties but different physical properties. All members have same general formula. All members have same functional group. बेशक जनरल फॉर्मूला स्टेरिक लगा लें, ये भी टाइम आएगा बताऊंगा आपको इसका मतलब क्या है. Each successive member it differs by CH2 group from the preceding member. जिन्होंने aesthetics लगाए हैं, you'll have to wait very patiently to understand what do I mean by these statements. लेकिन मैंने आपको start में इसलिए बता दिया ताकि जब मैं आगे आपको when I'll explain in details, you have these 4 statements at the back of your brains. Normally, when we ask you in the paper, let's say a 2 or 3 marks question that what is meant by the term homologous series, so if you write these points, you'll score marks. Now, which homologous series are there in our syllabus? So guys, listen please very carefully. And the first one is alkanes. Then alkenes. Alkynes के ऊपर esteric डाल लें. Then halogenoalkanes. इसके ऊपर भी आप esteric डाल लें. Then we'll learn alcohols. Then we'll learn carboxylic acids. And then esters. So these are some famous homologous series which we shall be learning in O level and IGCSE. इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ homologous series यही होती हैं, और भी बहुत सारी होती हैं, वो हम नहीं पढ़ रहे in O level or IGCSE. Only few we are learning in O level and IGCSE that what these homologous series are. चलें, अब वापस आते हैं periodic table के ऊपर. देखिए जितने एलिमेंट्स ग्रुप 1 के हैं उन सब में एक प्रॉपर्टी है, दे ऑल हैव वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ठीक है. अगर मैं कोई आपको एटम दूं और मैं आपसे पूछूं इन विच ग्रुप इट विल लाई, तो यू विल फाइंड आउट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. अगर एक एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं तो आप कहेंगे वो ग्रुप 4 में है. जो ग्रुप 7 है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाडीन, दे ऑल हैव 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. It means they all belong to group 7. तो मुझे ये बता दें आप प्लीज वेरी क्विकली, आई होप यू नो दैट, कि अगर आपने एक जो एलिमेंट है उसकी पोजीशन फाइंड करनी है इन अ ग्रुप, तो आप उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स चेक करते हैं. सिमिलरली इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर आपने ये देखना है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बिलोंग्स टू व्हिच होमोलोगस सीरीज, तो एवरी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज अ यूनिक ग्रुप. दैट यूनिक ग्रुप is the functional group. The functional group क्या है basically? It is a unique group in the organic compound. It is a unique group in an organic compound which shows chemical reactions. Like for example, अभी alkanes करेंगे जरा आखिर में. Like for example, alkene. अब जो alkene है वो एक होमोलोगस सीरीज है. मुझे पता कैसे लगा कि एक जो कंपाउंड है वो alkene है, उसमें CC डबल बॉन्ड होगा. अगर आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में CC डबल बॉन्ड देखते हैं तो आप ये इंस्टेंटली बता सकते हैं कि वो alkene है. इंस्टेंटली बता सकते हैं आप कि वो alkene है. अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में if I see a CC triple bond, it's an alkyne.
अच्छा, मैंने एल्काइन के ऊपर एस्टेरिक डाला इसलिए, व्हाई? बिकॉज एल्काइन आपके सिलेबस में नहीं है, ना ओ लेवल ना जीसीएसई। लेकिन वैसे फॉर आइडेंटिफिकेशन यू शुड नो, इसके केमिकल रिएक्शन सिलेबस में नहीं एज होमोलॉगस सीरीज, लेकिन एज अ ट्रिपल बॉन्ड अ स्टूडेंट शुड नो व्हाट एन एल्काइन इज, राइट? सिर्फ खाली इस रिस्पेक्ट में आपको बताना चाहिए एल्काइन क्या होता है, वरना हमने एल्काइन को एज अ सेपरेट होमोलॉगस सीरीज और रिएक्शंस नहीं पढ़ने, व्हाई? बिकॉज सिलेबस में नहीं है। सेम गोज फॉर हेलोजन एल्केन्स, ऐसा सिलेबस में नहीं, लेकिन वैसे आपको आइडेंटिफिकेशन ही बताना चाहिए। अगर किसी कार्बन के साथ कोई हेलोजन लगाओ, X, अच्छा X मींस एनी हेलोजन, तो अगर किसी कार्बन का कोई हेलोजन लगाओ तो याद रखें वो हेलोजन एल्केन है। नेक्स्ट, हाउ विल वी कम टू नो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो अल्कोहल फैमिली को बिलोंग कर रहा है? तो अगर किसी C के साथ OH ग्रुप लगाओ तो रिमेंबर इट्स एन अल्कोहल, इट बिलोंग्स टू द अल्कोहल फैमिली। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, C double Sir, bond can C, you C explain- triple bond C, OH, these all are functional groups. They are unique groups which will identify that which organic compound belongs to which homologous series. Next is carboxylic acids. How will you come to know कि एक organic compound belongs to carboxylic acid homologous series? तो अगर उस organic compound में COOH होता है तो जान जाएं कि it is a carboxylic acid. COOH को इस तरह लिख लें, COOH को CO2H लिख लें, COOH को आप ऐसे लिख लें, COOH को आप ऐसे लिख लें, absolutely fine. ये बेटा आप लोग सुन नहीं रहे? I was saying you that if any organic compound contains C double bond C, it belongs to the alkene family. If any organic compound contains C triple bond C, it belongs to the alkyne family. If any organic compound contains a halogen which is bonded to a carbon, of course, right? Remember, it belongs to the halogenoalkanes family. If any organic compound has OH group attached to a carbon, it belongs to the alcohols family. If any compound contains COOH group, it belongs to the carboxylic acids family. And lastly, the esters. अच्छा, अब जरा बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, गौर कीजिएगा। Please everyone, please observe. ये है ना COOH ग्रुप जो मैंने ओपन करके लिखा हुआ है, ये देख लें, मैंने बिल्कुल ओपन कर दिया, मैंने सारे बॉन्ड शो कर दिए, COOH ग्रुप। अच्छा, मजे की बात है, जो एस्टर है ना, इसमें भी COO ग्रुप ही होता है, COO। आप देख रहे हैं कि बेसिकली कितनी सिमिलैरिटी है बिटवीन एसिड एंड एस्टर, देख रहे हैं कितनी सिमिलैरिटी है। बस फर्क इतना है कि इन केस ऑफ एन एसिड यहां पे H लगा हुआ है O से, इन केस ऑफ एन एस्टर यहां पे C लगा होगा। It can be one carbon or a chain of carbons, but that's absolutely fine. तो अगर COO से H लगाओ तो इट्स कार्बोक्सिलिक एसिड, COO से C लग जाए तो इट्स एन एस्टर। सर आप ऊपर वाले दो बता सकते हैं वो कौन कौन से हैं? Which one's my child? सर ये जो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहे हो, ट्रिपल बॉन्ड जो बना रहे थे। Basically, if an organic compound contains a CC double bond,
if an organic compound contains CC double bond, it means it's an alkene. वो member belong करेगा alkene family को. जिस तरह let's say for example, let's see for example, ये एक organic compound. अब इसमें आपको C double bond C दिख रहा है, इसका मतलब ये alkene है. अगर एक compound ऐसे, अब इसमें आपको C triple bond C दिख रहा है, तो आप कहेंगे ये alkyne है. So if any organic compound has C double bond C, so you will claim that it's an alkene. If any organic compound has a C, a triple bond C, so it means it belongs to the alkyne family. G. Musa, you said that. Can you explain how carbon makes both double and triple bond? I think you should recall the chemical bonding chapter, my child. Recall the chemical bonding chapter. Jhaan we teach you how carbon can make a single bond, a double bond, and a triple bond, right? We happen to show you the bonding in CH4, the bonding in CO2, carbon dioxide, and the bonding in HCN as well, where carbon forms a single, double, and triple bond. Ji. Sir, I asked you during that chapter as well that my question is that can carbon form the 4 bonds? No, with beta, another no, carbon? no, it cannot. मैंने आपको तब भी कहा था no. But sir, मैं तब तक curious like why not? I'm searching on this. Beta, basically, अब since आपने पूछ लिया तो now you have to absorb it. लेकिन अगर समझ नहीं आएगी तो it's okay. A single bond is a sigma bond. In a double bond, एक sigma एक pi bond होता है. In a triple bond, एक sigma आपके 2 pi bonds होते हैं. सिर्फ खाली 1 sigma and 2 pi bonds, it may exist, in 2 different loci, right? If there is a tetracovalent bond, let's say for example, एक तो sigma bond तो अपने locus पे आ जाएगा, लेकिन 3 pi bonds अपने locus पे नहीं आ सकते, वो repel कर जाएंगे. जैसे वो repel करेंगे तो vibration आएगी bond में. जैसे वो bond vibrate करेगा उसमें resonance आएगी. जैसे resonance आएगी bond shatter कर जाएगा, वो exist नहीं करेगा. इसलिए in earth a tetracovalent bond, it does not exist. अगर तो समझ आइए तो it's fine. अगर नहीं आई तो फिर yes, we'll have to wait sir, until समझ आ गई है कि like आ गई है? 3 sigmas एक साथ नहीं रह सकते. नहीं, 3 pi bond एक साथ नहीं रह सकते. 3 pi एक साथ नहीं रह सकते और हाँ. like एक ठीक हो गया. हाँ, yes. Sir, esterase का आपने बताया था कि if one carbon makes 3 bonds with oxygen, so that makes it an ester. मैंने एस्टर में ये बताया था बेसिकली, अगर आप देखें तो मैंने ये बताया कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर में क्या फर्क है. हालांकि कार्बोक्सिलिक एसिड में भी COO ग्रुप है, एस्टर में भी COO ग्रुप है. बस फर्क इतना है कि इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड O से हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे O से कार्बन लगा हुआ है. Okay. Now, everyone, so basically, these are the homologous series जिनके functional groups you should know as students of O levels and IGCSE. अच्छा, अब मैंने alkanes जान के छोड़ा. Alkane का कोई functional group नहीं होता. Alkane is a mother family. वो असल में कार्बन की general property है कि वो 4 single bond बनाए. Right? अगर वो डबल बॉन्ड बना रहा है, वो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, वो ऑक्सीजन से बॉन्ड कर रहा है, ये उसमें डिफरेंशिएटेड फैक्टर्स हैं. तो बेसिकली एल्केन्स क्या होते हैं? एल्केन सिंपल, इट्स अ कार्बन चेन. सिंपल कार्बन चेन एक एल्केन है. तो एल्केन का कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता. फंक्शनल ग्रुप की स्टोरी शुरू होती है एल्कीन से. एल्केन इज जस्ट अ कार्बन फॉर्मिंग सिंगल बॉन्ड्स एंड ऑल. बस एल्केन का कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है. तो इसमें मैंने आपको एल्केन आखिर में बताया, राइट? So the homologous series which we shall be learning in our syllabus are alkanes, alkenes, alcohols, carboxylic acid, esters. Just for the sake of information,
and the know-how of the functional group. I've told you about alkynes and halogenoalkanes, so that you should know it. So guys, this was the introduction to organic chemistry. ये है organic chemistry का introduction. So कल हम शुरू करेंगे basically the first homologous series in details, right? आपको idea हो गया कि हम organic chemistry में क्या-क्या पढ़ने वाले. Now, once we have an idea that what we'll study in the organic chemistry, right? Here we start learning each homologous series separately. तो हम हर homologous series को separately पढ़ेंगे. And when once we study each homologous series separately, हम इनके reactions को merge भी करेंगे, इनको amalgamate भी करेंगे, and we'll learn what it is. We will very much go in details of structural isomers, the homologous series sterics, each homologous series in details, right? So that you should know what is going on in the organic chemistry. Are you all clear? यहां तक कोई बात unclear. इसके आगे नहीं चलना, मेरे साथ साथ रहना है. जितना आप मेरे साथ साथ रहेंगे, उतना you'll understand organic. Excuse me, sir. जी बच्चा. Sir, is ethanoic acid the part of a